Hello and welcome to the show of the Cinema Chronicles एक बार फिर से. Well, today we are concentrating on cricket. Yes, you heard it right. We have visited tennis, we have visited the swimmers, we have visited the film stars. Now we all the way go to the cricket fraternity. And today with us is a guest. His name is Atif Sheikh. He is known as an all-rounder, a right-arm off-spinner, right-handed batsman. Well. इनके बारे में क्या कहें? इनकी शख्सियत ही ऐसी है. Well, he's played for Mumbai under 16, 19, 23. He's represented for the West Zone Visi Trophy and the under 16 India camp. Hi Atif, how are you doing? Hi Rohan, I'm good. How are you? Yeah, I'm doing good. Yeah, welcome to our show. We are really excited to have you on our show today. Even I'm excited. How are you feeling? I'm feeling really good. Looking forward for a good conversation with you. Oh, thanks a lot. This is our first, from the cricket fraternity. You are the first guest who is appearing on our show. I'm glad. So I would just like to say you have opened the doors for the cricketers on our channel now. Okay. How are things going on with you currently? Lockdown में तो I don't think something is going really great, but it's fine. I'm just enjoying my time, being with my family, being with my friends, online, and all, watching their videos, movies, and all that stuff. But you must be missing the cricket practices and going to the stadiums. I can't even explain you how much I'm missing it. Well, that's happening with everyone. Whoever is in the creative field or the sports field, everyone is missing that. Well, no problem. Atif, ये कुछ चंद महीनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा. And we all will be watching you soon on the stadiums. आतिफ, हम बात कर रहे थे लॉकडाउन की. ये लॉकडाउन कैसे जा रहा है आपका? लॉकडाउन तो मतलब बहुत नॉर्मल है. Just being with my family, staying indoors, watching videos, movies, and I'm missing cricket a lot. I can't even tell how much I'm missing cricket. Well, Atif, I can understand that क्योंकि लॉकडाउन में सबकी हालत बुरी है. And we really hope the lockdown, जल्दी खत्म हो जाए. And we see you back on the stadiums, practicing and going ahead in the India jersey. Looking forward for that. Atif, tell me, you're saying something. Yeah, even I'm looking forward to that because I am missing it a lot. I can't even explain you. Yes, I can understand that, Atif. आपके दिल के जज्बात पहुंच गए हम तक. Atif, क्रिकेट की शुरुआत आपकी कैसे हुई, कहाँ से हुई और क्रिकेट ही क्यों चूज किया? बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं यार, मतलब टेनिस है, स्विमिंग है, फुटबॉल है. मतलब बचपन से क्या आपका शौक था? मतलब आप 3-4 साल के थे तब से आपकी शुरुआत हुई थी क्रिकेट में? क्रिकेट वॉज बेसिकली जस्ट अ गेम फॉर मी. एक एज तक, मैं 6th-7th तक आने तक, 10 years 11 years, I was just playing cricket in my area under my building and I used to love cricket. अच्छा. And I was the person who जो होता था जब मेरा बैट है मैं बैटिंग करूंगा. I was that kind of a person. Okay. To be very honest. And my dad used to love cricket, but during that time we didn't have that financial influence. So daddy नहीं कर पाए कुछ भी. अच्छा. So, and he always saw that thing in me that I used to love cricket. It was not that somewhere. So I was playing and suddenly one day my father turned up to me and said that you start playing professional cricket. If you're playing something, play it the right way. Right. So he just हमने academy join करवाई मेरे को. मैंने academy में cricket start किया. Starting में it was very normal. I never thought of playing a big level. It was very normal कि हाँ मैं बस खेल रहा हूँ. I'm just enjoying the game. Yeah. And धीरे gradually as I went on under 14 level, under 16 level, I realized that I have something in me and I should push it forward. Wow, very nice. So जब आप प्रैक्टिस करने गए थे कितने साल के थे? मतलब जब आपने कैंप ज्वाइन किया था? I was around 11. इतनी छोटी सी उम्र थी, 11 साल के आप थे और आपको डर नहीं लगा सीजन बॉल आके लग जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा? जहाँ डर होता है वहाँ खेल नहीं सकते आप. अरे वाह, क्या स्टेटमेंट कही है आपने. डर के आगे जीत है, ये कहना है. डर के आगे जीत है, बाजीगर उसको ही कहते हैं. नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया आतिफ, इतनी छोटी सी उम्र में 11 साल के. आई वुड रियली लाइक टू थैंक योर पेरेंट्स बिकॉज उन्होंने आपको प्रोत्साहन दिया एंड आप वहां पे हैं आज. आतिफ, वो पहला बॉल जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, पहला मैच आपका या पहला प्रैक्टिस करते वक्त कोई बॉलर आपको बॉल डाल रहा था एंड आपको कैसा लगा? यार ये सीजन बॉल यॉर्कर डालेगा या ये फुल लेंथ डालेगा या शॉर्ट बॉल डालेगा, क्या माइंड में चल रहा था? It has a very funny story behind it because when the first time I was facing the ball, the season ball used to make some sound when it is in the air. It makes some sound like ऐसा आवाज आता है. अच्छा. So normally जब I used to play tennis, I never मतलब कभी मेरे को मिला ही नहीं वैसा देखने को. अच्छा. तो सीजन बॉल जब पहला बॉल आया ना, I was like very scared कि आवाज कहाँ से आ रही है. अरे बाप रे.
Then I was facing a bowler who was under 23 level, and he was quick. Actually, he was quick, and he was bowling, and I was very scared. I was leaving the stump again and again. So my coach from behind said, "देख बेटा तू डरेगा ना, तो तेरे को बॉल लगेगा ही. तू खेल बिंदास. तू खेल, बॉल देख रहा है तेरे को नहीं लगेगा." So yeah, it was started like that. ओके, तो वहां से आप आगे बढ़े. आपको सबसे ज्यादा मुझे बताइए कि बॉलिंग पसंद है, फील्डिंग पसंद है या बैटिंग पसंद है? मैं पहले आई स्टार्टेड एज अ बैट्समैन. मैंने बहुत बैटिंग को मतलब फोकस करता था. देन आई स्टार्टेड डूइंग मीडियम पेस बॉलिंग. अच्छा. एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज दैट मेरा तो प्रोफेशन स्पिन है. मैं स्पिन में बहुत अच्छा कर सकता हूँ. तो आई नाउ मोस्टली लव फील्डिंग एंड स्पिन बॉलिंग, एंड बैटिंग इज ऑल्सो. आई लव एवरीथिंग इन क्रिकेट, नथिंग दैट नॉट लव. तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, ऑलराउंडर तो आप है ही, ठीक है. बट क्या हम आपको जॉन्टी रोड्स कह सकते हैं? जॉन्टी रोड्स तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल के हो गए. बट या, आई एम अ गुड फील्डर टू. ओके, वी डेफिनेटली लाइक टू वॉच यू. एंड डेफिनेटली समडे इफ आई आल्सो गेट अ चांस टू प्ले विथ यू. बट मैं सीजन बॉल से नहीं खेलूंगा, मैं नॉर्मल रबर बॉल से खेलूंगा. यू विल प्ले विद सीजन बॉल, आई विल मेक श्योर. यू विल मेक श्योर, मतलब आपने सोच लिया है कि इसकी बैंड बजानी है. It's fun, yeah. You try, it's fun. Definitely, I'm going to meet you because even I have loved cricket a lot since my school days. Yeah, Atif, cricket इंडिया में क्रिकेट को भगवान माना जाता है. लोग इसे भगवान की तरह मानते हैं. मतलब they follow it a lot. You watch from the time of Saurav Ganguly, Sachin Tendulkar, Rahul Dravid till MS धोनी और अभी विराट कोहली एंड टीम. आपको क्या लगता है कि जो जर्नी थी 99 से लेकर, मुझे ऐसे लगता है कि 99 से लेकर अभी तक, बेसिकली 99 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन क्रिकेट. दिस इज जस्ट माय थॉट. विथ द वे दादा लेड द टीम along with Sachin and Dravid, these three followed by Sehwag, Yuvraj, everyone, and then MS Dhoni took it over, and now Virat Kohli, Rohit Sharma, everyone. So क्या लगता है आपको, वो that was a turning point in the cricketing escapades of India? When Dada became the captain, before that Indian team used to just they never dominated. They just played cricket. They just played good cricket, but they never dominated. Since Dada came into the Indian team and he led the team, Indian team started playing like Australians used to play. Yes. Australians used to, the friendly banter, the sledging and all that stuff. Indians never did that. But since Dada came, we started fighting also at the same time while playing cricket. So that was the biggest turning point according to me. Yes. Absolutely right. Because he was the one who actually brought the वो zeal बोलते हैं ना, वो zeal उन्होंने लाई थी Indian cricket में, which was I felt which was lacking. आतिफ, कमिंग बैक टू यू नो, बहुत सारे मैचेस आपने खेले हैं. आपकी एक स्पेशल मैच जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, यूएसए इंटरनेशनल टीम के साथ आपने खेला है मैच. एंड आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. आपने 5 विकेट्स लिए थे वहां पे. इज इट राइट? सो हाउ वाज इट 5 विकेट्स लेना, 5 विकेट हॉल इज अ बिग अचीवमेंट. वाज दैट योर फर्स्ट? I have a lot of 5 wickets haul before that, but playing against a national team, it's obviously a privilege, first of all, and secondly, performing against them is something you don't expect. You don't see it day in, day out. It's something that special comes in your lifetime once, and it came to me, and I was very glad to grab it. And you were named man of the match, was it? For that? Yeah. So, कैसा लगता है यार जब मैन ऑफ द मैच आप होते हैं, आपको हजारों दर्शक देखते हैं, तो how was it? The thing was, my team used to know me. But after that match, even the USA players started communicating with me. They started knowing me. They tried to know me that I'm a good cricketer. They used to call me for net practices and something like that. So I really enjoyed that. So was this match held in India or you had to go to United States and play it? No. It was in Mumbai itself. Achha, it was in Mumbai itself. Yeah. Okay. So very nice of that. आपका first international match under 16-19 वो कौन सा था? My first state match was I was playing for Mumbai. I was representing Mumbai against Gujarat. Oh wow! And I never played competitive level till that time. मतलब जब cameras होते हैं, something like that. And that was my first experience. That was the first match you said? The first match, and I took 6 wickets in that inning. Okay, wow, that's very nice. मतलब debut match है. और debut में ही छक्के छुड़ा दिया आपने. Debut for Mumbai. Yeah, that's what I'm saying. बहुत बढ़िया performance. एंड उसके बाद कैसा रहा आपका सफर
अभी तक का ओवरऑल, आर यू सेटिस्फाइड विद इट? हाउ इज इट? आई वोंट बी सेटिस्फाइड until I play at least 100 matches for my country. सो आतिफ ये बताइए, आपका एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब है एंड आपका वो फर्स्ट मैच जो था वो कौन सा था और क्या आपने किया? मतलब मैंने सुना है कि 6 विकेट लिए थे, ये सच है? ये एक्चुअली सच है. ये सच है? 2012 my first match for state team. अच्छा. And in Mumbai it's a dream to play for state. Wow. And I was very new to it. मेरा first 2 मैच में बाहर बैठा था. I was in the playing 11. अच्छा, you were the third match. Yeah, the third match against Gujarat I got a chance to play. And I was very nervous, but I ended up taking 6 wickets in that match. Wow. My very first inning. मतलब आपने सामने वालों के चक्की छुड़ा दिए. Yeah, basically you can say that. नहीं, but that was good. So, were there some known players who are playing in the international circuit now in there? In that team, there was one player, Kathan Patel. अच्छा. He's playing for Gujarat Ranji Trophy, right? अच्छा, he's playing. Wow, that's a good achievement you had. Yeah. So congratulations for that, Atif. 6 wicket haul in your first match, and that was wonderful. पर आप एक चीज भूल गए आतिफ यहाँ पे. हमने ना आपके बारे में प्रॉपरली स्टडी करके हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि वरना आपने पूछा ही नहीं. हमें कैसे पता आपको 6 विकेट, आपने 6 विकेट फर्स्ट इंटरनेशनल मैचेज में लिया आपके? अच्छा, ये एक्चुअली पूछना चाहिए था मुझे. हाँ, तो मतलब ये होमवर्क करके आए हैं हमने सोच लिया है कि हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे आप अटकेंगे थोड़े, लेकिन आप अटके नहीं. ओके. कैसा लगा? आई होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? एवरीथिंग इज गुड. ओके, गुड. तो बैटिंग वाइज व्हेन वी कम, आपकी पहली 50 या पहला 100 वो कब था, किसके साथ हुआ था? That was under 14 level club cricket. Okay. I was playing for PJ Hindu Gymkhana. Okay. And there was a tournament named Bombay Gymkhana tournament. Okay. And PJ Hindu Gymkhana was basically a underdog team. अच्छा. I played for underdog team. Okay. And I scored 100 and we reached in the finals. Okay. And that was the first time PJ Hindu Gymkhana reached to the finals, but we lost unfortunately in the finals. Okay. Wow. That's okay. Perfectly okay. That's fine. One of the part and parcels of cricket. Atif, you have been, named as a man of the match in the under 16 Vijay Merchant Trophy. Is it? Yeah. So Vijay Merchant Trophy में man of the match होना एक बड़ा, एक achievement है. Yeah. So वो experience कैसा था आपका? आई वॉज वेरी न्यू टू इट, है ना. मुझे ना कहता था अच्छा हो या खराब हो, मुझे ना ऐसा लगता नॉर्मल है, बस चल रहा है. बिकॉज आई नेवर न्यू दैट फ्लो, क्या यार मैं कौन से लेवल पे हूँ. बिकॉज आई नेवर हैड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट लेवल, क्या यार वो इतना बड़ा लेवल है. अच्छा. एंड एज आई वेंट फर्दर इन क्रिकेट आई केम टू नो यार विजय मर्चेंट ट्रॉफी वाज अ बिग लेवल फॉर मी. यस, ऑफ कोर्स. व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अंडर 16 इंडिया टीम फॉर दैट फ्रॉम दैट टूर्नामेंट. उनके परफॉर्मेंस से जब मैं अंडर 16 इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हुआ, तब मुझे पता चला कि यार इट वाज अ बिग डील टू परफॉर्म देयर. यस, डेफिनेटली. विजय मर्चेंट मतलब जो भी यंगस्टर्स आते हैं, they look forward to being a part of the Vijay Merchant Trophy. So do you, one question who comes to, if you get a chance, what do you think about the test matches and one day internationals and T20? Because when you call about a cricketer, I feel कि internationals and test matches भी important होते हैं. Yeah. What's your take on that? My take is I obviously choose test match over anything. Because test match cricket is the real test of character, real test of what sort of attitude you have towards the game. Because it includes everything. It's patience, it's perseverance, how much your skill is important. Because T20 and 50 cricket are basically shorter format, and there is more of a hurry into it, not a planned something. And when you play test match cricket, it's planned, it's overall. It's a combination of you. Overall. Yes, agreed. It describes you. Totally agreed. It requires a lot of patience. वहाँ 5 दिन खड़े रहना आसान नहीं होता यार. मतलब सचिन और द्रविड़ ऐसे ही नहीं बने हैं in short. Exactly. It requires lots of patience. How many total matches? अभी तक कितने matches आप खेले हैं overall professional cricket में? Professional cricket I haven't counted. I have played lot of matches. Okay. Club cricket, including school cricket, college cricket, everything मिला के मैं बहुत मैचेस खेला. I don't even remember how much. So अभी आगे आपने क्या सोचा है? टारगेट्स क्या रखे हैं आपने? As I told you, I want to play 100 games for international. My team, my country. I have to represent my country, and below that, I'm not going to accept anything. Okay. So definitely you are saying a point in this interview today. कि बॉस मैं 100 क्रिकेट मैचेस मुझे खेलने ही खेलने हैं. And that is a very important point you said, because for any cricketer उनका ये ड्रीम होता है कि अगर मैं इंडिया टीम के लिए जाता हूँ तो मुझे 100 मैचेस खेलने हैं.
I remember Mohammad Azharuddin had a statement he had made in 1996 or 1998. I don't remember the year, but he always wanted to play 100 test matches. Yeah. And he played till 99 test matches unke hue. Aisa? Yeah. I think something like that. I don't remember the proper number. But yeah, 99. Yeah, 99. So I think 100 is a dream come true for any cricketer. Definitely. Atif, 90s का cricket, ठीक है? When दादा took over, फिर जो जर्नी रही आगे, so 90s से 99 से लेकर 2015 तक पकड़ी है, ठीक है? या 2012 तक पकड़ी. This was the period of Saurav, Sachin, Dravid, Sehwag, Yuvraj. Then you have Dhoni who comes from 2010. ठीक है? 2008 या 2010 में उन्होंने स्टार्ट किया. So basically that particular period was dominated by Dravid and Sachin to the most, followed by the rest. We had Lakshman also to it, VVS Lakshman, great cricketer. Then next decade you have seen Dhoni compiled with Yuvraj, Gambhir, Gautam Gambhir and the other teammates. And now you have Virat Kohli, Rohit Sharma dominating the cricketing scene. What difference do you feel are there between all the three generations? Difference, I won't say there's a lot of difference because they all are legends. The names they have taken all are legends of the game. Of course. They have changed the game entirely on their own. Yes. That is what I believe. The phase of Indian cricket has changed because of all these legends. Yes. They have changed drastically. As you see, at the time of Dada and when VVS Lakshman, Rahul Dravid used to play, they used to just drop the opponent, मतलब उनको गिरा देते थे ऐसा खड़े रह के फील्ड पे. Yes. They used to just stay there, play there, मतलब भले ही run rate कुछ ना हो, but just used to save the wickets. Yes. And the drastic changes happened after Virat Kohli, Rohit Sharma, when they play, they even stay at the wicket and they score runs at the same time. Agreed. Totally agreed with you. With 5 runs, and in Test match cricket now, एक दिन में 300-300 रन बनते हैं. Right. पहले यूज्ड टू सी एक दिन में 100-150 रन 200 रन बहुत से बहुत बन जाते थे. अभी 350-400 रन एक दिन में बन जाते हैं. Yes, totally agreed with you. The game has got fast. Yeah. It was a different generation of cricket altogether. Yeah. Those were Dravid, Lakshman, Dada were more patience and calmness. Now it's been more of dominating ज़्यादा हुआ है. And exactly. in their terms, उनके टाइम का वो सही थे उनके जगह पे और अभी के जो खेल रहे वो सही है उनकी जगह पे. That's what I would like to term it as. When it comes to your cricketing style, have you idolized anyone till date? Frank opinion चाहिए, मतलब diplomatic answer नहीं चाहिए आपका. Not at all diplomatic. Yeah. You can expect that from me. Yeah, so I'll give you two options there. Yeah, okay. Idolized, because one of the idols इनमें से एक idol मेरा है, ठीक है? Okay. It's Rahul Dravid और सचिन तेंदुलकर. I'm expecting the answer. मुझे पता है आप क्या बोलोगे, but फिर भी I want to know it from you. I'll go with Sachin Tendulkar, hands down. अच्छा, okay. I'm calm right now. You can speak. Actually, Sachin sir is anytime. I started cricket looking at him. I always look up to him, so yes. I cannot choose anyone over him. Okay. So you have idolized Sachin. Yeah. Okay. So which of the qualities आपको लगता है कि उनकी कौन सी qualities आपने आपके बैटिंग में या बॉलिंग में या ओवरऑल एक काम डेमोनो जो उनका है, so क्या क्वालिटीज उनकी आपने ली है? उनकी मैंने बस एक ही क्वालिटी अपने अंदर लिया हूँ, that is playing the game from your heart. It doesn't matter whichever game you're playing, whether it's a friendly game, whether it's you're playing for a state team, whether playing for an international team. You just keep yourself as you are the same. In a friendly game, in a state match, in an international game, you just be true to yourself. Okay. Be honest with the game. That's it. Okay. So it's a test of the character, I would say. Yeah. It should term it as. Okay. Atif, क्रिकेट में चैलेंजिंग सिचुएशंस बहुत आते हैं, ठीक है? आपने इंटरनेशनल मैच तो हम भी देखते हैं, हमने भी देखे हैं बहुत सारे. एवरी इंडियन नोज इट. इट्स अबाउट कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में 3 विकेट गिर जाते हैं 6 रन पे 4 रन पे. इंडिया के भी बहुत टाइम पे ये हुआ है. देन यू हैव सम मे बी धोनी एंड सचिन या धोनी एंड द्रविड़ और धोनी और विराट कोहली, दे कम टू द क्रीज एंड दैट्स द पीरियड. वो एक बोलते हैं न्यू बॉल इज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले. वो ओपनिंग के कुछ ओवर्स होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो
वो पीरियड निकालना कोई भी टेस्ट मैच हो या इंटरनेशनल हो बहुत चैलेंजिंग होता है। एंड सपोज आपके ओपोनेंट ने आपको 350 का टारगेट प्लस दिया है, आई फील वो बहुत चैलेंजिंग होता है। और 10 रन पे 3 विकेट जाना और वहां से फिर शुरुआत करना, इट्स मोर चैलेंजिंग बिकॉज यू नो यू हैव अ टेलेंडर्स कमिंग आफ्टर द 7th पोजीशन, यू हैव द विकेट कीपर बैट्समैन और एनी ऑलराउंडर कमिंग अप आफ्टर दैट। सो ऐसे चैलेंजेस कभी आपने फेस किए हैं व्हाइल चेसिंग द टारगेट? Yeah, I had such challenges. School level पे ही. Okay. When it started, it was all new. I was playing for Rizvi School, and we had a match against Anjuman Islam. अच्छा. And that match was on a wet wicket, and we lost the toss, and we got to bat first. And we had everyone in the team: Prithvi Shaw, Sarfaraz Khan, Arman Jafar. We had a very strong. Yeah, we had a strong batting lineup. अच्छा. So what happened? We lost 5 wickets in just 30 runs. 5 wickets for 30 runs. Yeah, we lost Prithvi Shaw, we lost Sarfaraz Khan, we lost all other 2-3 people, and Arman was the only one who was standing there. Okay. And I went to bat. And Arman, I personally feel as a cricketer, batting with Arman Jafar is just like, he knows cricket inside out. Oh wow. That nice. level of maturity on school level cricket was very bigger for me. So I went to him and he was like, कुछ नहीं करना है. You just have to stand with me. I'll take the whole responsibility. Okay, wow. Like, okay. So he scored 249. Alright. And I scored 50 odd runs. Wow, congratulations. I just scored 50. Congratulations. I played 250 balls to score that 50. And he scored 259 something. And we took the score to 350. Oh, so 30 पे 5 विकेट थे. वहाँ से you joined Arman Jafar. आप कह रहे हो कि आपने 50 किया 250 बॉल्स में. मतलब आपने तो सोच लिया था भाई ओपोनेंट्स को आज धुला दूंगा पे, मुझे बस खड़े रहना, मेरा काम सिंपल है. Right. But you gave a good partnership with him then. Yeah. Arman Jafar is, if I'm right, Wasim Jafar's son, right? Yeah, Wasim Jafar's nephew. Okay, nephew. I'm sorry. Wasim Jafar's nephew. Nephew. Yeah, he was also a legend. Definitely, Wasim Jafar also. So beautiful. He is a legend. Yes, he is definitely. So that was one of the situations. एंड कभी ऐसे हुआ है जैसे आप बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, बॉलिंग कर रहे हैं, सामने के बैट्समैन, जस्ट माय क्वेश्चन है, यू कैन आंसर इट और यू कैन इफ यू डोंट वांट टू यू कैन से नो. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस सिचुएशंस व्हिच यू टोल्ड मी. दैट वाज अ टेस्ट मैच. वनडे में कभी ऐसा हुआ है? वनडे इज मोर चैलेंजिंग देन अ टेस्ट मैच बिकॉज वनडे में आपके पास टाइम नहीं होता है. यू नो, टेस्ट मैच में आपके पास टाइम होता है, आप 1000 बॉल भी खेलो और 100 रन भी बनाओ, बट यू नो दैट यू हैव टू वेट, यू कैन वेट, यू नो, यू हैव 5 days. लेकिन वनडे में ऐसा नहीं होता. वनडे में इट्स लाइक 50 ओवर्स का मैच है और अगर 350 का, फॉर एग्जांपल, अगर 10 पे 3 विकेट गए हैं और 6 ओवर हुए हैं, 350 का टारगेट इन 50 ओवर्स, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो ऐसे कभी सिचुएशंस हुए वनडे के हिसाब से? हमसे वनडे में तो नहीं हुए, बट T20 में ऐसा हुआ एक बार मेरे साथ. T20 इज मोर चैलेंजिंग. आई एम कमिंग टू द T20 क्वेश्चन. बहुत क्वेश्चंस है इसमें आपके लिए. वनडे में तो नहीं हुआ ऐसा. One day में didn't face. Okay. And bowling wise, now I'm coming to the T20 point of yours. As you're an off spinner, ठीक है? Yeah. Okay. Now just tell me one thing. You come in which number normally to bat? On which number? I come 5 down, 6 down. Okay. Low middle order. So that comes in the 5 number and 7 number. Yeah. Okay. Because when you speak about T20, I'm speaking about the batting format right now. T20 की जब आप बात कर रहे हैं, बहुत कम टाइम होता है यार. मतलब 120 बॉल एंड ओपनर्स अगर टिक गए तो वो 10 ओवर तक टिक जाते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद धड़ाधड़ विकेट्स गिरने लगते हैं. कभी होता है, ऐसी सिचुएशंस हुई हैं. सो कभी ऐसे हुआ है कि आप बैटिंग करने आए हैं T20 में, बहुत चैलेंजेस है, टास्क बहुत बड़ा है और आपके पास यार सिर्फ 3 ओवर है, उसमें से आपको 45-50 रन मारना है. मतलब आपको सेट होने के लिए भी टाइम नहीं दिया जाता है, यू नो. सो बेसिकली जब क्रिकेट बैटिंग करता है क्रिकेटर, तो बेसिकली पहले ये सोचता है कि पहले मैं ऑफ द मार्क हो जाऊं, यू नो, एंड उसके बाद देन आई डू वॉट एवर आई वांट टू एज पर अ टारगेट. बट 3 ओवर खेलना है, 50 रन बनाने हैं, ऐसे कोई टारगेट्स मिले थे आपको? एक्चुअली ऐसा हुआ था कि वी वर प्लेइंग रेड बुल टूर्नामेंट. अच्छा. इट वाज इंटर कॉलेज एंड आई वाज द कैप्टन ऑफ खालसा कॉलेज टीम. अच्छा. सो दैट हैपेंड दैट हमको 7 ओवर में 90 रन चाहिए था जीतने के लिए. कितने ओवर में? 7 overs 90 runs. 7 overs 90 runs. That double the balls. Yeah. Okay. Yeah. And I had a batsman who was the opening batsman. He was standing there, but we lost 5 wickets सामने से.
Okay. And he was playing on 40 odd runs. All right. So 40-50 odd runs. हाँ. So I just went inside and you know we were playing in Podar College. अच्छा. And Podar College and Khalsa College has a rivalry from a very big time. अच्छा. Podar, Khalsa and Rizvi, the triangle rivalry is going on always. यार आप शो पे बता रहे हो ये सब? No, it is a rivalry and it's a very friendly rivalry. मतलब यहाँ पे जो तीनों teams होती है, strong teams होती है. अच्छा. Okay. And there is a competitive cricket होता है इनके बीच में. Understood. So I just went into bat and I was like, his name was Japjit. He is a companion with me. He has played Visit Trophy also with me. Japjit Randhawa. अच्छा. अच्छा. So I went to him and I was like, what to do now? I was like, क्या करना है? जीतना ही है कैसे भी करके, कुछ भी करके. हाँ. देखते try करते. We'll give it a try. That's all we can do. Understood. So I just told him कि एक काम करते हैं, भागते हैं. हाँ. I just hit the ball, नीचे मुंडी कर भागते हैं. अच्छा. 2 रन तो 2 रन, 3 रन तो 3 रन भागते हैं. हाँ. He was like, okay. And he was already tired. He was playing on 50. Understood, yeah. So I told him, ठीक है, I'll be with you, just start. And you know that momentum shift होता है 1-2 ओवर में. Yes. Then I came to the bat. Agreed. And we suddenly changed the momentum of the game. It started shifting towards us. मतलब उसको भी confidence आ गया मेरे को देख के. Then he started hitting sixes. Oh. All of a sudden he started hitting sixes. And we cleared that match keeping 4 balls. अच्छा. We won that match keeping 4 balls. Wow, that's a very nice thing. मतलब you had won it keeping 4 balls, so that's a very good achievement. Coming back to your T20, you said you idolized Sachin Tendulkar. Yeah. Sachin Tendulkar is a one-day specialist and test different legend of the game. But test matches में और one-day में उन्होंने बहुत नाम कमाया है. T20 भी वो खेले हैं, but ज़्यादा नहीं. So when I just a contradictory question for you over here. So when you speak about idolized, आप कह रहे हो कि आप लोग T20 में ज्यादा आप ये मतलब खेले हो या आपका ज्यादा ये रहा है, रुचि रही है. So how do you can you just help me out with that? Idolize Sachin Tendulkar and ruchi in T20. See, when it comes to T20, see the thing is he has class, and with class you can play any format. That's what I believe. Agreed. Whether a test match, you can change your game according to the situation. Agreed. And Sachin sir has that quality. Whether it is T20, I've never seen him bogged down and bat in T20. He has still dominated whenever he is in T20 also. Agreed. No matter how much he has played T20, even IPL, I have seen him dominate. Yes. He has dominated every team. He has. Basically, I have idolized him because he's good at everything. Okay. You put any challenge in front of him and he's like, I'm ready. I'm going to take it on. What do you think of the IPL? Okay. So what do you want me to say about IPL? आपको क्या लगता है IPL एक मुझे ऐसा लगता है अभी नए जनरेशन के क्रिकेटर्स को IPL एक पैड है, लॉन्चिंग पैड टुवर्ड्स इंटरनेशनल क्रिकेट, टुवर्ड्स नेशनल क्रिकेट. बहुत सारी यंगस्टर्स यहीं से परफॉर्म करके आगे जा रहे हैं और जा चुके हैं. वी नो इट, हमने देखा है सिलेक्शंस में. सो आपको क्या लगता है IPL में, क्योंकि IPL इज अ फॉर्मेट जहाँ पे फॉरेन के भी प्लेयर्स होते हैं प्लस इंडियन प्लेयर्स भी, मिक्स ब्रीड होता है, अलग अलग टीम्स होते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स, बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स, मेनी अदर टीम्स. सो IPL के बारे में आपकी टेक क्या है अबाउट द सिलेक्शन फॉर्मेट, अबाउट द प्ले, अबाउट एवरीथिंग? अबाउट IPL आई वुड से IPL पहुंचने के लिए भी आपको रणजी ट्रॉफी पहले खेलना पड़ता है. अच्छा, उसके बेसिकली टू रीच इनटू अ T20 IPL team, to crack into it, you need to play 5-day matches. You have to prove yourself there. You have to make a name in Ranji Trophy level, because that's when the franchisees, the coaches, the staff have a look on you. They know you. They come to know you कि हाँ यार ये लड़का परफॉर्म कर रहा है, ये लड़की का क्लास है, इसके अंदर कुछ है. They see something in you, and then they pick you for the IPL team. Okay. IPL is totally different ball game, but the process of going there is from first class cricket only. Yes. There is no other option. You have to play at least 5 list A matches and 5 first class matches to reach there. Okay, that's what I wanted to. That's the answer which I wanted. Because जो भी दर्शक ये एपिसोड देख रहे हैं ये शो, बेसिकली एक नॉलेज मुझे चाहिए था आपसे कि IPL में जाने के लिए क्या करना पड़ता है. क्योंकि बहुत मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं यार IPL है तो इट्स आराम से मतलब गए और खेले और IPL में घुस गए. दिस इज व्हाट आई वांटेड योर आंसर कि 5 लिस्ट ए मैचेस होते हैं. अगर यू सेड समथिंग, वन मोर एडिशन टू इट. सो ये आपको खेलने पड़ते हैं, टेक्निकली करेक्ट होना पड़ता है, तब जाके आपका IPL में सिलेक्शन होता है. Very good point. Thanks for getting that point out. One question. This is a personal question. ये पूछना मत, मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे. ये मैं हर क्रिकेटर से पूछने वाला हूँ ये क्वेश्चन. राहुल द्रविड़ के बारे में क्या सोचते हो? Rahul Dravid. Yes. Rahul Dravid is the only one who has
benting on their knees. They have literally सामने की टीम ये सोचती थी कि यार इनको आउट मत करो, सामने वालों को आउट कर दो. अच्छा. इनको आउट करने की कोशिश भी मत करो. Okay. मतलब वो जब आते थे they were the only, ऐसा था, मतलब one of the great cricketers has told this कि अगर राहुल द्रविड़ पहले 10 बॉल खेल लेते हैं, उनके बाद उनको आउट नहीं करना है, सामने वाले को आउट करना है. हाँ जी. आप आउट नहीं कर सकते. I think this was Glenn McGrath I guess had told this. Yeah, I guess. Yeah. I remember. तो he told कि पहले 10 बॉल अगर वो खेल लेते हैं तो बाकी की फिर उनको आउट करने ट्राई भी नहीं करेगा कोई. हाँ, मतलब बाकी के प्लेयर्स को उनके पीछे पड़ जाओ. That was his position in the team. That was his structure in the team. He was the wall of Indian cricket. Yes, definitely he was a wall of the Indian cricket. We'll go to the next question now because इस question पे ही पूरा episode चलता रहेगा. So अभी पूछना मत क्यों. So I'll go to the next question. Basically, he's my idol, so that's why I asked you the question. Okay. राहुल द्रविड़ सर के बारे में. जब हम फॉर्मेट्स की बात करते हैं, 3 अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं. आजकल के कुछ क्रिकेटर्स है, जैसे there was a cricketer named Subramaniam Badrinath. Yeah. He played test matches, one days, and then T20s also. You had Mohammad Kaif, who also played lots of one-day matches, not much test matches. I feel he was very good for the test matches. This is my personal point. Both Subramaniam Badrinath and Mohammad Kaif test matches के लिए perfect थे. T20 ज़्यादा नहीं. My question to you is कि जब ये दो खेल रहे थे तभी ऑलरेडी इंडियन टेस्ट क्रिकेट में इतने स्टॉलवर्ड्स थे. You name it, from Sehwag, Gambhir, you get into Sachin, you get into Dravid, you get into Lakshman, you get into Saurav Ganguly. 6 तो इधर ही हो गए. Exactly. एंड 7वां कोई कीपर होता था. जब द्रविड़ कीपिंग नहीं करते थे तब तो या ऑलराउंड इरफान पठान होते थे. सो बेसिकली ये जो 7, इट वाज फिक्स्ड. इनको आप इनको हिला नहीं सकते थे इस टीम को. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन देयर. कब होता था, अगर कोई इंजर्ड होता था तब जाके किसी को मौका मिलता था. सो व्हाट डू यू फील अबाउट सुब्रमण्यम बद्रीनाथ एंड कैफ स्पेसिफिकली? दिस इज जस्ट माई क्वेश्चन टू यू. आपको क्या लगता है? बिकॉज आई फील बद्रीनाथ हैड लॉट्स ऑफ पोटेंशियल. सो योर थॉट ऑन दैट? He was a great player, no doubt. He is a very class act. Basically, Yes. if you see his batting style, he was a very class act. Yes. But the thing is, you have to be the right person at the right time at the right place. Agreed. That's all. That also is very important. That is the thing that you have to. But that is not the thing you can do. That is the thing that is natural, and that is luck. If you put anyone against Sachin sir, Dravid sir, Lakshman sir, there is no chance to breaking in the team. Of course, that's Because what I want. These people are so decorated that you cannot even try to replace them. Yes, till they perform very badly. Yeah, and Mohammad Kaif was the one who has changed the whole scenario of Indian fielding. Agreed. He was That's what I feel. Mohammad Kaif and Yuvraj Singh. Yes, together. beautiful fielders. I remember the NatWest Trophy match Yeah. against They England. were started diving around, stopping the ball, saving 20-30 odd runs in a white ball cricket game is just something big you can do for your team. Yes. Agreed with you, Atif. Atif, a question to you. You have also represented West Zone Vizzy Trophy. Yeah. This name is कुछ अलग ही, Vizzy Trophy. What does it mean and क्या मतलब है? कुछ अलग फॉर्मेट था ये? जरा कितने मैच आपने खेले, क्या था? Just let us know on that. Actually, matches होते नहीं हुए. I got selected. I was about to represent. हम लोग ग्वालियर में थे. We were about to go to Bhubaneswar next 2 days. Okay. And the thing that Dehradun, we were about to go Dehradun, and the thing that happened is lockdown लग गया. And it got postponed. अभी postponed है वो. We still get a message that it's gonna happen. It's gonna happen very soon. Okay, so best of luck for that. We are waiting. You get back to the green launch soon. You were the second highest wicket taker in the inter-university tournament this year. Yeah. I guess in 2019, you must be saying. Yeah. So, how many wickets had you taken during that time? I had taken 10 wickets in 3 games. 10 wickets in 3 games. Yeah. Very good achievement again. आतिफ यार इतने achievements है ना, मतलब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं बोल रहा, आप मुझे मेरी बोलती बंद कर रहे हो. Because it's very good achievements, and this is something you have put a base for yourself towards the national stadiums soon. Yeah.
hoping for that. Are you even thinking to vouch for the IPLs? I am thinking of everything that is possible related to cricket. Okay. Whether it is IPL, whether it is first class cricket, whether it is international cricket. It's just about cricket for me. Cricket is everything to me. Okay. There is nothing beyond that. There is nothing. I cannot even imagine something beyond that. That was the last thing I would imagine. So ये आपने तय कर लिया है, क्रिकेट में ही आगे कुछ करना है और क्रिकेट लेजेंड बन के रहना है. Very very nice of Atif. Atif, your best bowling performance, your best batting performance. आपको कौन सा लगता है आपके हिसाब से? I'll tell you this thing. It's a very interesting thing. Yeah. My best bowling performance, I have taken a lot of wickets, a lot of 5 wickets, 8 wicket haul also I have taken. Okay. But my best bowling performance was I took 1 wicket. You took 1 wicket? 1 wicket was Wasim Jafar sir. Okay. So had you, on how many occasions have you played with Arman Jafar? I have played a whole cricket, school cricket with him. I have played state matches with him. Lot of years. I have played around 5 to 6 years with him. Oh wow! So that's a lot of experience. So you must be the best of the buddies, I guess. He has been my room partner in every. Room partner. I got the whole thing. Fixed. Best friends. Best friends. Kind of best friends. Understood. Best friends. इसलिए partnerships भी इतनी अच्छी सी होती है. इससे इतना मतलब chemistry भी दिखती है फिर. Actually wanted to be with him because you got lot of things to learn from him. Lot of things to learn. Agreed. Retirements की हम जब बात करते हैं, ठीक है, legends retire होते हैं. अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से अभी एक रिटायरमेंट हुई है. स्पेसिफिक 2 रिटायरमेंट हुई हैं अभी. मैं नाम पे आता हूं, लेकिन उसके पहले वो एक क्वेश्चन है आपको. लेजेंड्स जब रिटायर होते हैं तो क्या उनको फेयरवेल मैच दिया जाना चाहिए? एक्चुअली दैट्स देयर चॉइस इफ दे वांट टू प्ले. अगर उनको खेलना है तो ऑब्वियसली देना जाना चाहिए उनको, बिकॉज दे हैव सर्व्ड द नेशन फॉर सो लॉन्ग इयर्स एंड दे हैव सर्व्ड इनसाइड आउट विदाउट कीपिंग असाइड देयर पेन्स, keeping aside every family and everything. They have served the nation, so they deserve a farewell match, according to me. Okay. No. My main question focus over here is कि अभी टीम से बाहर अगर कोई है, he is a legendary player, ठीक है, बट फिर वो रुके 2 साल तक टीम में नहीं आए. बहुत नाम कमा चुके हैं, डेफिनेट लेजेंड है. पीपल स्टिल लव दोस प्लेयर्स. लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम का सैचुरेशन आ जाता है एंड टीम में वापसी नहीं होती है, सो दे रिटायर वेरी कामफुली. So, do you think एक फेयरवेल मैच देना जाना चाहिए सभी लेजेंड क्रिकेटर्स को? Yeah, actually देना जाना चाहिए, because legends never retire, according to me. Yes, agreed. अभी इस साल में I think 5 days back 2 रिटायरमेंट्स हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट से. इंडियन एक नाम लूंगा तो बहुत बड़ा नाम है, MS धोनी. Yeah. And second is Suresh Raina. Immediately there was a retirement from Suresh Raina also. So what do you feel about it? सुरेश रायना तो 2-3 साल से कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं. And MS Dhoni, I think 1 year he was out of the team. So what's your comments on that? The thing is, they both decided together. According to me, Suresh Raina had told MSD long back that when you will take retirement, that day when I'll take retirement. Because they both have been the best of friends. The best of friends, the best of teammates. They have always been together, whether it is CSK, whether it is Indian team. They have almost served for the same period of time. They both, almost. Suresh Raina came a bit later, but still, they both were together almost all the time. And the thing is, Suresh Raina had told MSG long back that I am going to retire the day you retire. Okay. And MSG, as you know, is known for his style. He took a retirement in style. He took his retirement on style. Yes. That was also very great. Yes. There's nothing common about him. He's a legend. There's nothing common. He's a legend यार. He's brought World Cups to India. 2 World Cups. आसान चीज नहीं होती. इतने साल से हम World Cup की कोशिश कर रहे हैं. The person who not just changes his own game, he changes the opponent's game also. That is the only power MS Dhoni possesses. Only MS Dhoni. When he comes on the field ना, opposition डर में रहते थे. ये अभी क्या करेगा, क्या नहीं करेगा. either इसको जल्दी आउट करो या फिर मतलब problem. I guess Mike Hussey told this thing that India should play MS Dhoni even if he's on wheelchair. He would still make a difference in the ground. Is it? Yeah, Mike Hussey said this. That's a very very positive statement. Exactly. Very positive statement. चलो great. One question before we go. ऐसे कभी हुआ है आपके साथ में आतिफ, फैन फॉलोइंग होती है, ठीक है, फीमेल फैन फॉलोइंग पे आते हैं हम. I remember युवराज सिंह fans doing a lot of crazy things for him on stadiums. वो हुआ है.
आई रिमेम्बर राहुल द्रविड़ के घर पे एक फीमेल फैन गई थी उनके बंगले के बाहर, एंड डोर पे नॉक करके थक गई थी, बोल रही थी कि मैं राहुल द्रविड़ जी से शादी करना चाहती हूँ, एंड द्रविड़ हैड टू कम आउट. शी वॉज वेटिंग फॉर आवर्स ओवर देयर. वो जा रही नहीं है, गार्ड भेजो, जा रही नहीं है. द्रविड़ सर हैड टू कम आउट एंड उनको समझाना पड़ा उनको कि ऐसे नहीं होता करिए, नीड टू लुक अबाउट योर करियर, योर फैमिली, एवरीथिंग. देन शी ऑटोग्राफ साइन करके निकल गई. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? इतना बड़ा फैन मोमेंट तो नहीं हुआ है मेरे साथ, बट स्टिल आई हैव लॉट ऑफ फैन मोमेंट्स. मींस पीपल कम एंड पीपल जस्ट से कैन आई गेट योर ऑटोग्राफ, रिगार्डलेस ऑफ नोइंग हु आई एम नॉट सच अ डेकोरेटेड क्रिकेटर, but still when they see me, they have seen me somewhere, they've seen me play somewhere on any television, something like that, so they don't know my name but they still come, like we have seen you somewhere, can we get your autograph? And I feel that fans is what makes a celebrity. Without fans, a celebrity is nothing. Without a fan base, but yeah, there are challenges to it. Yeah, it's a very fans, कुछ फैंस होते हैं जो द्रविड़ वाले फैन होते हैं, कुछ फैंस होते हैं जो युवराज वाले फैंस होते हैं, और कुछ फैन मतलब भूल ही जाते हैं वो क्रिकेटर है, उनको तो यही चाहिए कि मुझे मिलना है और मुझे उनसे शादी करनी है. ऐसे भी फैंस होते हैं. ऐसे फैंस होते हैं, वैसे फैंस से बच के रहना ही चाहिए. यार मैं एक क्वेश्चन पूछना, आपकी मतलब आगे जाके अगर आपका ऐसा मौका मिलता है कि आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, आपकी शादी हो गई, जस्ट पर्सनल क्वेश्चन, और ऐसी कोई फैन आती है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, तो आप क्या करेंगे? एंड अगर आपकी शादी नहीं हुई, ठीक है, आपकी मम्मी डैडी आपके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, और ऐसी फैन आती है और बोलती है भाई आई एम अ बिग फैन ऑफ योर, आई लव यू लॉट, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और आपको भी पसंद आ जाती है. 2 questions, आंसर आपको देना है. It's a dilemma you have put me into. Actually, if I am married, obviously I'll say देख बहन मैं married हूँ, please understand, मेरी वाइफ मेरे को मारेगी, so you वाइफ मारेगी, so you can be my fan for the rest of my life, can't be my wife. And if secondly, if I'm not married, so I can't say anything about it. I'm sorry, yeah. You can't say anything about it because I know you will select it. You go ahead with it. Obviously, if it's good, if my wife matches with someone, obviously I'll go ahead. ओके, चलो ठीक है. आप दिल की सच्ची बात आपने कही यहाँ पे. आदित्य, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. बट हम अभी जा रहे नहीं है. 5 मिनट का सेगमेंट बचा है, तो ज्यादा सोचेंगे नहीं, हम अभी रैपिड फायर पे जा रहे हैं. ठीक है, आपको फटाफट विद इन 2 सेकेंड्स जवाब देना है. ज्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप सोचोगे क्योंकि आज हम वर्चुअली ये शो कर रहे हैं, तो आपके पास मैं आपका एक्सप्रेशन भी नहीं देख रहा हूं. सो आई मतलब आपको 2 सेकेंड फिर भी दिए जाएंगे. ठीक है, आतिफ रेडी? माय एक्सप्रेशन विल बी एज पर योर एक्सपेक्टेशंस. अच्छा, चलो, then I'll watch it in the edit for that. Atif, you need to choose between these 2 cricketers. ठीक है, okay, you need to choose, and अगर जो choose नहीं करे तो why didn't you choose? Okay, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़. तेंदुलकर. Why no to Rahul Dravid? Just because Rahul Dravid sir is a legend, but not as big as I see Sachin sir. आप ये समझ रहे हो, आप दिल दुखा रहे हो किसी का? दिल दुखाने वाली बात नहीं. Everyone has the choices, yeah. Everyone has preferences. नहीं, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा. Someone is superior, that doesn't mean someone else inferior. Okay. नहीं, I'm just kidding. Okay, so I got your whole answer. Okay, you get a chance to select any one of these. Okay, any one of these. You have to choose any one of these. T20 or one day international. One day international. Best captain, MS Dhoni or Saurav Ganguly? MS Dhoni. MS Dhoni. More aggressive, Saurav Ganguly और विराट कोहली? विराट कोहली. ओके, नई जनरेशन को सपोर्ट करते हैं, हमारी पुरानी जनरेशन को भाव ही नहीं दे रहे. विराट कोहली is more aggressive according to me. No, just kidding on that. So very quick answers because आप सोच रहे नहीं है ज्यादा. So I know that आप दिल से clearly बता रहे हैं. Best all-rounder in the world since 2000 till date. Since 2000. वासिमा, मतलब 90s से लेकर अभी तक के. I'll give you 3 options. वसीम अकरम, जैक कैलिस, शॉन पॉलक. जैक कैलिस. Why? Jack Kellis,
according to the average of his run scoring and his wicket taking. मतलब basically, if there is a all-rounder, you expect him to either perform in batting, either perform in bowling. या कोई एक. Okay. Jack Cully is the person who has consistently performed in both the things in a single match also. All right, I got your answer. Okay. There many people say कि 90s के जो bowlers थे, 90s 2000 के, you had Glenn McGrath, you had Sean Pollock, you had Wasim Akram, you had Javagal Srinath. These were the most. Shoaib Akhtar, Waqar Yunus. अभी भी और भी बहुत है. साउथ अफ्रीका में और भी बॉलर्स थे. एलन डोनाल्ड थे. न्यूजीलैंड के भी शेन बॉन्ड थे. ऑस्ट्रेलिया में भी एक दो बॉलर्स थे. आई डोंट रिमेंबर द नेम्स. शेन बॉन्ड थे. मुथिया मुरलीधरन थे. ओके, दोज बॉलर, अनिल कुंबले, दोज बॉलर्स. ओके, एंड अभी के जो बॉलर्स है, पीपल से कि 90s to 2005 तक के जो बॉलर्स थे, they were more good, more dangerous than the crop of ballers we have now. What's your thoughts? Yes or no? It's not true actually, because the quality में difference नहीं है. The changes that came into the game. जैसे पहले spinners were better just because एक ball use होता था, and spinners का पूरा game जो होता है वो old ball से होता है. जहाँ तक I know. So, yes. Shane Warne and Muttiah Mullidhan used to get an old ball in the hand. अभी कैसा हो गया है in limited overs cricket, you get 2 balls in both the ends. 2 नए बॉल होते हैं and वो बॉल जल्दी ओल्ड नहीं होते, तो स्पिनर्स को वो क्वालिटी नहीं मिलती है. सेकेंडली द क्वालिटी ऑफ बैट्स, अभी क्वालिटी ऑफ बैट्स मिस टाइम भी 6 चले जाते हैं. यू सी अ बैट्समैन मिस टाइमिंग अ बॉल एंड गोस फॉर 6, टॉपर लगता है 6 चले जाते हैं. सो गेम हैज टर्न इनटू मोर ऑफ अ बैटिंग फ्रेंडली गेम. Because entertainment has taken place, lot of runs you get to see, a lot of sixes, lot of boundaries, and bowling has become more difficult in this time, according to me. Agreed. Atif, next question और 5 ही questions है, then we'll sum the show up. अगर आप इंडिया को, just a question यार, अगर आप इंडिया में नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी और कंट्री में बॉर्न हुए होते हैं, सो कौन सी कंट्री को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आउट ऑफ दीज फॉर द क्रिकेट? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. अरे ऑप्शंस तो दे रहे, तो पहले आंसर दे रहे हो यार. It's okay. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड. I would say England. ओके. क्यों, वर्ल्ड कप जीता इसलिए? नहीं, वर्ल्ड कप जीता इसलिए नहीं, but England has a very big past of cricket first of all, and I like the conditions in which English cricket happens. That seaming conditions, the grounds, the facilities, just fascinating. You can't even compare English cricket with anyone else. Okay. When you want to go to the international scene, ठीक है, इनमें से किसकी विकेट आप लेना चाहोगे सबसे पहले? मतलब आपकी फर्स्ट विकेट इंटरनेशनल सीन पे. I'm saying when you play for the national team India. 3 ऑप्शंस में से एक है विलियमसन, who is the captain of New Zealand. I will say Virat Kohli. I'll say just as a question. Okay, just as a question. You're done with options? इन दोनों में से किस? Yeah. Very less options you gave me. Yeah. Yes, I was thinking about the names. I would like to take Williamson's wicket because I would obviously not like to take my own teammates. I want to play under Virat Kohli. So that's why I gave you the question of Virat Kohli. I never want to take his wicket. I want to be in the good books always. Of course, definitely. So you would like to take Williamson's wicket? Okay. Atif, आपको आपके बॉलिंग में 5 बॉल में 5 छक्के उड़ाए हैं किसी ने, बैट्समैन ने. ठीक है, जैसे थॉट कि आप बॉलिंग कर रहे हो, जो बैट्समैन है उन्होंने 5 सिक्सेस मारे हैं आपको. अब प्रेशर आप पे है एंड कैप्टन बहुत भड़के हुए है यार, नहीं जाना चाहिए, 6 रन चाहिए जीतने के लिए. वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन. उस टाइम पे क्या करोगे? I would obviously go for something that will be a surprise for the batsman. Means a spinner bowling a bouncer. No batsman thinks of that. According to me, it's my plan. I'm revealing it. No matter how many batsmen sees it now, I would obviously go with a bouncer. Achha, you'll go with like a short ball something. Yeah, short bouncer. Actually, bouncer that hits the head of the batsman because he's not expecting a spinner to bowl a bouncer. And I actually bowl a bouncer. I have bowled a bouncer in many matches. ओके, सो आप ये रिवील कर रहे हो इस शो पे, याद रखना. I have many other options. I won't tell that.
नहीं नहीं ज्यादा आप रिवील मत करना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. Let it be this way. Okay. So your favorite legendary cricketer? Sunil Gavaskar, Vivian Richards. Sir Viv Richards. यार गावस्कर नहीं? ऐसा नहीं कि गावस्कर नहीं, गावस्कर सर इज ऑल्सो वेरी गुड, बट विव रिचर्ड सर हैज बीन entertaining people at that time where people, मतलब जहाँ batsmen used to just look to survive, and he was the one used to, without helmet, used to dominate fast bowlers. He used to hit them for sixes. Understood. How can you imagine someone hitting Jeff Thompson for a six? Of course. Next ball is going to get onto your head. That's for sure. Yes. So, that was a very difficult bowling attack on those times. Gutsy. Okay. Yes, definitely. Traditional. You need to answer between these two. Which type of cricket you prefer while batting? While batting. Or Rahul Dravid. Yeah. Or Rahul Dravid type of batting, which is a traditional, or the Virat Kohli like type of batting, which is dominating. I would go with Virat Kohli style because somewhere it happens both ways. You are surviving, at the same time you are scoring runs also. Okay. Because there is no point if you are surviving and you are not scoring runs, because your scoreboard is not ticking. You are just there. You are just standing. You are killing time, because nowadays cricket is not about killing time. It's about scoring runs. Agree. Yeah. Agree with you. I'm on that point with you. Okay, I think we have wrapped the rapid fire, Atif. Thanks a lot. We give you 9 on 10. Thank you for that. दिल से आपने सच्चे answers दे दिए, and we enjoyed the whole rapid fire. I hope I didn't put you in dilemma on any question. That's fine. Pardon me? You have put me once, but that's fine. Which was the question? I don't remember. Even I don't remember, but I remember I told you this thing. So you'll watch it when the show comes. Yeah, sure. I don't remember. Sure. Before we go, any message for your fans you would like to give? Not for the fans. I would give it to the youth that is playing cricket now. People are in a hurry. Even the parents, they want a kid to just play for IPL, play for Indian team. I would tell them that it's a very slow process. It comes with hard work, a lot of hard work. It takes everything out of you. So please don't hurry behind your child. And even the cricketers, I'll tell, don't hurry to reach somewhere. You will reach at your own time. Everyone takes their own time. If someone is excelling today, that doesn't mean even you have to go with him. You will go a bit later, but that will be for your better. So just keep on hard working and all the best. Okay, beautiful message, Atif. Any special message for your female fans who hit on you? Just keep loving me. That's all I can say. Otherwise, I'll end up in controversies. So please. Keep loving you, that's what Atif has said now. So all the female fans, keep loving him, keep loving him. This is the word I take from the episode until the end. Thanks a lot, Atif. It was wonderful. You gave your time from your busy schedule, and it was a show. बहुत अच्छा टाइम था आपके साथ, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस. We hope to see you in the national stadium soon, in the national jerseys. इस एपिसोड में आपने एक मुझे प्रॉमिस किया है कि आप मेरे साथ भी क्रिकेट खेलोगे. एंड वो मौका कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन I would vouch for that. I would wait for that, and I would like to bat. I would not like to bowl. You bowl. You bowl. I'll bat. ठीक है. Okay, fine. बट एक श्योर है, बॉल ज्यादा आगे नहीं जाएगा, वो सर्कल के अंदर ही घूमेगा. ये भी आपको बता रहा हूँ. Yes, that's why I said that. That's why I said that. But wonderful having you on the show. And your partnerships with Arman Jafar, everything, the experience which you shared, direct दिल से आपने बात की है हमारे से आज. Best of luck for all your endeavors. लॉकडाउन आपके लिए अच्छे जाए, आपकी फैमिली के लिए बहुत सुरक्षित जाए, बहुत अच्छे से जाए, सेहत सबकी अच्छी रहे. हम यही चाहते हैं, दिली तमन्ना है मेरी आपसे. एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर यू सून. अगली बार जब आप कुछ मैन ऑफ द मैच जब जीतोगे, प्लीज हमें कॉल कीजिए, हम आपकी इंटरव्यू फिर से लेंगे, क्योंकि नाउ मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है इंटरव्यू लेके. मुझे भी बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. थैंक यू रोहन. थैंक यू फॉर, आई हैव लॉट टू स्पीक, सो इट्स फाइन. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी राइट नाउ. थैंक्स अ लॉट. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शो पे, ये बताइए. बहुत अच्छा. यू आर अ वेरी गुड होस्ट. अरे बाप रे बाप. अब ये मैं 9वें आसमान में था पहले, अभी मैं 11वें आसमान पे जा रहा हूँ, ये बात याद रखना आप. No, you are a good thanks a lot. बट क्या है ना, अभी अगर मैं मतलब भाव खाने लग जाऊँ ना,
तो फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं सबको ये बोलूंगा आतिफ जी ने मेरी तारीफ की इसलिए मैं अभी I'll take that because ड्यूटी तारीफ नहीं है। Thanks a lot Arif. Even this is my first show with from into the cricket fraternity, and getting such a compliment is very important for me. Thanks a lot. Take care of yourself. Stay tuned for more interviews from the cricket fraternity. We'll be getting back soon, and we're definitely going to have more and more interviews with Atif, because Atif will be on the Cinema Chronicles again and again and again. Yeah, Atif, thanks a lot. Best of luck. Enjoy and be safe. Thank you. Yeah, Thank you so much. take care. Thank you. Thank you. Take care.